So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are here back with the Wednesday session. And the topic for today is slavery to salvation. So very interesting topic. Actually, I keep reading the speaking tree and I pick up some topics from there which strike me. And then I add on to the wisdom given there along with the wisdom that I have. And I make it a program. So that's what I normally do. I keep hunting for topics, and the topics come to me very generously. So the topic today is salvation and from, you can say, bondage or slavery to salvation, right? So first, let us understand these two terms. When we hear of suffering, we hear bondage, we hear slavery. What comes to your mind? First, let us look at these two topics. I mean, the same topic, the two words that we are distinguished. Let us look at that into the details and see how much of this is present in our life. And then we see how we move from A to B. And this is not a physical space, by the way. This moment is all at the level of being. Yes. So there is no actual moment happening, but there is a lot of dynamics involved. So we will see that. So let us first look into the slavery. What do you think slavery is and how is it present in your life? First, let us look into that. So anybody who has some idea, who wants to share? What is slavery mentioned in this topic and how is it present in your life? Unless you distinguish this, there will be no movement from slavery to salvation. Yes, कौन बोलना चाहेंगे? I will quickly share my thoughts, of course. Sure. The slavery in my mind is not having freedom to express, not having freedom to do what you want to do, not having freedom to be what you want to be. So that is slavery. Okay, perfect. Very good understanding. So not having freedom to think, say, or do whatever you want to do. So that is some kind of a slavery. Yes, that is some kind of a slavery. So we can look at slavery as bondage. We can look slavery as ego. You can look at slavery as any restriction, any kind of negativity, any kind of negative energy that you're experiencing. So basically, it is some kind of a bondage. You are being chained. Obviously, when you are being chained, there is no freedom. So very well understood and very well expressed, Apurvaji. Let's acknowledge Apurvaji. Very good. Okay, anybody else who has? Yes. On top of that, being devoid of freedom, you are also forced to do something which you are not willing to do. So that is an additional, dimension of slavery. Okay, so you're in bondage actually. So bonded labor. You're doing something which you're not, which you don't want to do. You don't like to do. You're pressurized to do something. No? So whenever you are feeling pressurized in life, guess what? You are in bondage. You are in slavery. Yes. So that's a good understanding. Very good. और कोई बोलना चाहिए? Welcome सिमी जी. Yes, Leslie, go ahead. Just one line for me is all reactions are slavery and all responses is opposite to that, freedom. Okay, so all reactions are slavery and all responses are opposite of that. So that means it is freedom, correct? Okay, got it. I won't say salvation now, I will say freedom. तो अगर बंधन मुक्त हैं और बंधन में हैं, इतना फर्क है अभी. स्लेवरी में बंधन में है और स्लेवरी नहीं है तो आप बंधन मुक्त हैं. You are free. Okay. All right, good, Leslie. Anybody else who has any different understanding? What is slavery? And how is it present in our life? My life, rather. Our bhi nahi. How is it present in my life? How is it depriving me of my love, peace, and joy? How is it making me more negative? How is it making me feel miserable? How is it triggering my victim ego? All this is slavery. To look into your life and see where this is present. Unless you locate that, there will be no journey from slavery to salvation. Let me assure you that.
हाँ, औरों की लाइफ में है, मेरी Sure. लाइफ में नहीं है. सॉरी, there will be no moment in your life. Look into your life first. It has to be present in your life. क्योंकि अभी हम कोई बुद्ध नहीं बने हैं. हाँ, अभी गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन अगर एक कदम भी दूर है, तो देयर इज सम एलिमेंट ऑफ स्लेवरी विच इज प्रेजेंट, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्टिंग्विश एंड experience or manifest freedom in that particular area. Yes, anybody else who wants to share? Sir, I wanted to share that Hmm. sorry, I was not available for last 10 minutes. So मुझे ऐसा लगता है like slavery is Maya, it is attachment. Yes. I mean, so it is जितने ज्यादा हम attached होते हैं, it's like we are slave. मतलब I do not know how to what extent I'm like saying anything which is meaningful. But I think कि slavery is all Maya, whether it is paisa, whether it is ghar, whether it is your spouse, your kids. So slavery is attachment. It is all Maya. Okay, I take your first statement. I agree with that, and I will take that. So slavery is Maya or attachment. Okay, that is perfectly fine, because when you are attached, obviously you are in bondage. तो आप कहीं ना कहीं से फंसे हुए हैं, दलदल में फंस गए हैं, कहीं फंस गए हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. दैट इज बॉन्डेज. दैट इज यू आर कंप्लीटली चेंज्ड. तो चेन में अगर बंधे हुए हैं, दैट इज इट. बट व्हेन यू से माया, लेट मी टेल यू, वेल्थ इज नॉट माया. घर, प्रॉपर्टी, ये सब माया नहीं है. ये जरूरी चीजें हैं लाइफ की. डोंट डिस्कार्ड देम बाय सेइंग इट इज माया. व्हाट डज माया मीन? ओके, लेट्स हैव दिस डिस्कशन फर्स्ट, बिकॉज माया इज बॉन्डेज. लेट मी टेल यू दैट. अगर हम इस शरीर में हैं, हम पैदा हुए हैं, आत्मा इस शरीर में है, तो हम माया में जकड़े हुए हैं. दिस इज द मैट्रिक्स, एंड इन द मैट्रिक्स देयर इज ओनली बॉन्डेज. दैट मच आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट. बट व्हाट इज माया? Maya doesn't mean it is an imagination. Maya doesn't mean it is unreal. Maya only means it is real and existing. it is existing, but then what? It is an illusion. It is like the mirage in the desert. दिख रहा है लेकिन है नहीं. It is not permanent. It is not eternal. It is coming and going. It is fleeting. ये बाहर की दुनिया, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आने वाली जाने वाली हैं, ये माया है. आप ट्रक के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते दिस इज एन इमेजिनेशन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी, दिस इज माया. ट्रक इज गोइंग टू क्रश यू, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी और ट्रक एक ही रियलिटी में है. दे विल कोलाइड, राइट? सेम थिंग इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए railway track and say train is a maya, goodness gracious, you are in trouble. Yes, that will be the end of your this lifetime. So you have to understand, maya doesn't mean unreal. Maya means real, but it is not the ultimate truth. That is what maya means. Okay, so wealth, obviously you need wealth, वरना जियोगे कैसे? रिलेटिव वर्ल्ड में हो. व्यवहारिक जिंदगी में आपको घर भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, व्यवसाय करना है. ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स की ड्यूटीज हैं. ओके, so I hope I made it clear what is maya. But attachment to anything in the outside world, that is what you need to take care of, because that attachment will create a bondage. वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से अगर आप अटैच हो जाते हो, that attachment will create bondage for you, and that will create suffering, that will create slavery. So the understanding has to be there. बाहर की दुनिया में it's all fleeting, it's not eternal or permanent, so it is not the truth, but it is real, and you need to live in this real world, so you need all of these. Correct? I hope I am clear, no confusions, right? Okay, good. So let us understand more. What is slavery? What is slavery? Any other dimension of slavery which you have experienced in your life? Any kind of suffering or misery in your life is a slavery? Yes or no? Yeah, Whenever you slavery are to thought, slavery to our thoughts. slavery to our thoughts, in what sense?
means हम अपने thoughts के in a sense कि we cannot जब control नहीं करते हैं हम लोग कर So पाते हैं तो thoughts के भी overthinking हम or slave negative thinking, overthinking or negative thinking negative can be thinking, considered yeah. as a bondage. Correct? हाँ, yeah. But if you are having a very high elevated thought, I am divine, and then you are working on it, it is not a bondage. In fact, that will free you from bondage. So thoughts are not a bondage, but your negative thinking and overthinking can create a feeling of bondage, feeling of suffering and misery in your life, right? So that way you have to take care. What is actually causing the suffering and misery? What is actually causing the life of getting pressurized? That is bondage. You're working in an organization, the boss is making your life miserable. Now you are in bondage. Don't blame him. You are in bondage. That is why you're experiencing it. The same boss, some other junior in his team, he is absolutely okay with that boss because he is not suffering. He is not in bondage. Okay. So there is nothing wrong with the boss. There is nothing wrong with the organization. What is wrong is my inside story is messed up. I am in bondage. That is the issue. Clear? Everybody has some idea of slavery or bondage? Okay. And obviously, when you are free from this, you are on the path of moving towards salvation. Salvation, you can say, is complete freedom. So whatever you are experiencing as a bondage, when you get freedom from that, तो आप बंधन मुक्त हो गए and आपको थोड़ी सी चैन की सांस लेने को मिली. That is freedom for you. And when you experience freedom in all areas of your life, in all aspects of your life, you can say you are moving towards salvation or freedom. Yes. So that is what is the journey that we are looking forward to in this session. So let's have some more insights. Swami Vivekananda has a very, very brilliant quote, which I often speak and will say that in the program also. So what he said was, good, good, bad, bad. None escape the law. The one who wears the form wears the chain. But free from all the body and mind, you are eternally free. So he talks of bondage and freedom both in this quote. So let's first understand what does he mean by the first statement. Good, good, bad, bad. That means as you do your karma, so is your fate or your destiny. तो अच्छे कर्म करोगे अच्छा भाग्य बनेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा भाग्य बनेगा. जैसे ही आप जन्म लेते हो आप इस फॉर्म में आते हो. So the moment you wear this form of body and mind, you wear the chain of karma. तो शरीर में आते ही आप कर्म के बंधन से जुड़ जाते हो. तो बंधन में आ गए यानी कि आप बॉन्डेज में आ गए. The moment you are in this body, whatever karma you do, irrespective of tamas है, rajas है या sattva है, you are doing karma and these are the only options available for you. So you are in the realm of bondage. Yes. But far beyond the name and form, that means far beyond the body and mind. Who you are is the soul, and the soul is eternally free. So at the soul level, we are completely free. The bondage or maya is only at the level of body and mind. Yes. So as a jiva, as a triune being, body, mind, and soul, karma can affect only body and mind. Maya can affect only body and mind. But who am I? I am the soul, eternally free. That is where I need to experience freedom. So slavery to bondage actually means body consciousness to ego or ego consciousness to the soul consciousness. That is the journey we are looking forward. Yes. Okay, so let's have some more people share. What is opening up? Slavery and salvation. Can you see the gap? Can you see the difference? Can you see the impact in your life? Anybody who wants to share? Yes, Leslie, go ahead.
what's coming up is thinking that you're the body is the path towards slavery, and knowing that you're not the body, it's going to come and go, is freedom. Very good, very good. So that's a very good insight and very good understanding actually. Let's acknowledge Leslie. Yeah. So see the stages. अगर मैं अपनी life stages को देखूं, there was a time when I was sleepwalking in my life. Many of us have done that before that awakening came. हाँ? तो सुप्त अवस्था में हैं, sleepwalking में हैं. We have no idea what spirituality is, what God is. We are completely messed up in life. Nothing is working in life. Health is bad, wealth is bad, relationship is bad, job is bad, career is bad. Neighbor से झगड़ा, इधर झगड़ा, उधर झगड़ा, मारा मारी, and life is messed up. Yeah. And I was sleepwalking in life. If you ask me, there was a stage. Then that awakening came. Awakening is when you suddenly wake up from your sleep. Just like when you're sleeping and you suddenly wake up, you come to a new reality. तो जो sleepwalking कर रहा है life में, अचानक उसको एक awakening मिलती है and he wakes up. That is awakening. Nothing to do with enlightenment. अभी awakening हुई है. उसके बाद आत्मज्ञान मिलता रहता है. That means you read the scriptures, you have your own understanding, you do some programs, whatever, and you are following some yoga mark and you are moving forward on the spiritual journey. What is that giving you? That is moving you forward on the spiritual journey, giving you आत्मज्ञान. तो आप वो spiritual wisdom ले रहे हो और spiritual journey में आगे बढ़ रहे हो, and that आत्मबोध जब होता है, that is called self-realization. So there is a lot of gap between the awakening and the self-realization. आत्मज्ञान से आत्मबोध आता है. Both is the realization. So what Leslie just said, from I am not the body, I am the soul. This is a knowledge. This can be a concept. It may not be a reality. मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ. मैंने स्कूल के डेज में पढ़ा था ये. I remember this in my school days. When there is a small chapter from Bhagavad Gita and we were told कि जैसे आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ये सब हमको एक्सपेरिमेंट पहले बताया हुआ एग्जाम्पल. कुछ फर्क पड़ा लाइफ में? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये आत्मज्ञान लेने के लिए जो मन की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं थी. यानी कि हमारा जो चित्त था उस समय काफी डिस्टर्ब था और काफी डर्टी था. तो when the mind is dirty or mind is restless, it is not still and it is full of poison of desires, the mind will not accept any आत्मज्ञान. तो आत्मबोध is a very very distant possibility. वो हो ही नहीं पाता है. Right? So you have to be at the right frame of mind to accept that wisdom so that you can move forward with the Atmagyan to achieve Atmabodh. I hope I am making the journey clear. Yeah. आत्मज्ञान जरूरी है, लेकिन साथ साथ में अपने चित्त को शुद्ध करते हुए जाना है, तभी वो उसका ज्ञान अंदर जाएगा और वो डिविनिटी का रिफ्लेक्शन दिखेगा. And when the divine is reflected in the mind, that is when you get self-realized. Then of course you keep on moving in the journey and achieve God realization, which is a different aspect of it. But this whole journey is from sleepwalking to awakening to self-realization. सुप्त अवस्था, जागरण, आत्मज्ञान, आत्मबोध. These are the terms which you need to distinguish very clearly in your journey. Now you would know where you are. Yes? So you can have some sharing if you want. Anybody who wants any clarity or anybody who wants to share, please go ahead. Vijay, if you're okay, should switch on the video and share. Simi ji, and of course Mani. Yeah. Anything that is opening up, anything you want to share or ask, please go ahead. थोड़ा डीप हो गया क्या? सर, आत्मज्ञान तो हर चीज के लिए चाहिए. आत्मज्ञान ही तो हम इतने साल से ले रहे हैं आपसे. हाँ बिल्कुल, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इनफैक्ट इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स.
Awakening के बाद you need lot of lifetimes to move towards self-realization. But if you have done good work in the last work, possibly you will get it faster. Right? तो So आत्मज्ञान because ही of सब this कुछ है। आत्मज्ञान only तो हमें salvation मिलेगा ना। बिल्कुल। इतने टाइम से जो हम ये ले रहे तो हैं, पहले शिक्षा आप ये ले रहे देखिए हैं। आप कहाँ पे हैं। ऑब्वियसली इफ यू आर इन दिस सेशन, आप सुप्त अवस्था से बाहर निकल गए हैं, आप जागृत अवस्था में हैं और आपको आत्मज्ञान मिल रहा है, तो आप आत्मबोध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जागरण और आत्मज्ञान तो क्लियर हो गया, राइट। अब इस पे कितनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उससे पता लगेगा कि आपको आत्मबोध कब होगा। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन बाय द वे? सेल्फ रियलाइजेशन इज व्हाट? यस यस। जब अपने आप को बोध हो जाए, आत्मबोध कि मैं शरीर नहीं हूँ, आई एम द सोल विच इज कंटिन्यूइंग। तो ये तो कॉन्सेप्ट भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था। ये तो हाउ डू यू नो इट इज नॉट अ कंसेप्ट, इट इज अ रियलिटी नाउ? हाँ, वो सर एक्सपीरियंस है। जैसे आपने बोला बचपन में, तो मेरा ऐसा मानना है कि बचपन में जब स्कूल में भी जैसे पढ़ाते हैं ना सर, हमारे वहाँ भी था सर। व्हेन आई वाज इन 4th and 5th स्टैंडर्ड, वी हैड, मतलब गीता जी का 5 श्लोक बोलिए, चलो वी ऑल यूज्ड टू हैव दैट, कंपटीशन, मतलब बच्चों को। हाँ, वो 15वें अध्याय का। बट देन दैट मेक्स यू लाइक जैसे, इफ आई बिलीव दैट अगर हमारे पास कुछ तो हम लेकर आए हैं, दैट इज हाउ वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू दैट काइंड ऑफ कि कहीं ना कहीं वो अपने आगे चल के आपको काम आने वाला है। लाइक अभी एट दिस एज आई फील दैट वो कहीं ना कहीं बीज मतलब बोया गया हमारे अंदर। So you have to And understand, very well said, Nivedita ji, very well said. Right? Let's acknowledge Nivedita ji. See, what we need to understand is, जब भी हम आत्मज्ञान ले रहे हैं, it is like a seed. आप एक बीज बो रहे हैं। जब वो बीज बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा और उसमें फल आने लगेंगे, जब उस फल को आप चखोगे, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। बीज बो देने से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुई। बीज पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल मिलेगा, फल खाओगे और वो मीठा फल होगा। यू आर वेरी क्लियर, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल और नॉट मोस्ट टेस्टियस्ट fruit that you have ever tasted. That is self-realization. You have tasted it. You have made that real in your life. God realization means you are making God real in your life. You are invoking the divine in your life. You are operating from that divinity in every aspect of your life. Then you have made God real in your life, and that is God realization. When you are operating from the soul consciousness in every aspect of your life, आपके हर सोच, आपके हर बोल और आपके हर कर्म में दिव्यता झलके, तब आप सेल्फ रियलाइज्ड हो। Otherwise, it is a concept. Otherwise, it is a concept. Okay. Yes, yes, सिमी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, दैट मीन्स कि जब जैसे किसी इंसान को गुस्सा नहीं आता, या जैसे पहले बहुत गुस्सा आता था एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने गुस्सा कम कर दिया, तो एक फैक्टर हो गया कि गुस्सा कम हुआ, लेकिन बाय चांस कभी गुस्सा दोबारा आ जाए, सो इज इट अ सेल्फ रियलाइजेशन कि अरे ये तो हमें तो आना नहीं चाहिए था गुस्सा, अब हमें आ गया, तो उस टाइम पे हम सेल्फ रियलाइज नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए था। गुस्सा आना इज नॉर्मल, इट इज नेचुरल इमोशन। व्हाई डू यू वांट टू डिवाइड योरसेल्फ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड? अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है, गुस्सा नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, राइट। बट दैट यू शुड बी नॉट अटैच्ड टू दैट एंगर। आप अच्छा, उस अच्छा। एंगर में 1 साल तक जलते रहोगे तो आप मर जाओ। गुस्सा आया, ठीक है, अब क्या करना है? आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस विच इज हैपनिंग, आई विल स्टॉप दिस। यू गो डू योर बेस्ट एंड स्टॉप इट। इफ यू हैव टू फाइट ए धर्म युद्ध, यू डू ए धर्म युद्ध। अगर सुदर्शन चक्र निकाल के किसी का सर काटना हो, वैसे आपको करना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। इवन एन अवतार Lord Vishnu did that, right? Lord Krishna took out the Sudarshan Chakra and he chopped off the head of the adharma which was happening. He had to stop it. Sometimes a divine intervention was required to stop Duryodhan in the evil intentions in the Raj Darbar. जब चीरहरण हो रहा था, he did his best to stop it in his own way. जब शिशुपाल को मारना था, then he did actually
chopped off the head. Correct? और जब जरासंध को मारना था, he used bhim against him. So you will get angry at the adharma happening and you will do something to stop it. Anger is a natural human emotion. Don't miss out on the humanity. But जैसे फेमस डायलॉग है, क्रोध को पालना सीखो. You need to channelize that energy of anger into something constructive rather than into something destructive. Okay? And for the benefit of the majority. Not saying benefit of everybody, benefit of the majority. Recent example we have seen, a terrorist attack was manifested and the anger rose, but the anger was channelized in a proper way and proper decision was taken, proper action was taken. Now, I will not get into that debate of whether it was good or bad, but sometimes anger and violence is important to maintain long-term, not long-term I would say, but to maintain some kind of semblance of peace. Yes or no? तो अगर आपके सामने कोई अत्याचार हो रहा है, उसको बर्दाश्त करना कायरता है. आप भी अत्याचार का साथ दे रहे हो. You have to put your foot down. You have to take a stand. उसके लिए गुस्सा आ रहा है तो आने दो, बट धर्म के रास्ते पे चलना है. फर्स्ट बी वेरी क्लियर, आपका धर्म क्या है. देन यू डू योर कर्म इन लाइन विथ योर धर्म. मेकिंग सेंस, सिमी जी? Yeah, got But it. having said that, what you said is introspection is important. If all my negative parameters I introspect and I see improvement in the intensity, in the duration, and in the frequency of the negative outbursts, then I know, yes, I am moving forward on the path. You are nowhere close to self-realization, but you are on the path moving forward towards self-realization. That's what I would say. Yes? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अगर ये आपके आ रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जानी चाहिए, इनकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए. करेक्ट? And इनकी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए. Then you know you are moving forward on the path. And whenever it comes, it should be channelized in such a way that it is for the benefit of the majority of the people. Not for my self-interest. It is for the benefit of others, including me. Fine. That's okay. Clear है? Yes. If anybody here wants to have a discussion, welcome. Or if you are not clear about something, you can ask. पर ह्यूमन इमोशंस को नेगेट नहीं करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है, पर उससे अटैच नहीं होना है. दैट इज द वे हाउ टू लिव इन दिस लाइफ. लॉर्ड कृष्ण वाज नेवर अटैच्ड टू एनीथिंग, बट ही गॉट एंग्री आल्सो, ही वाज humorous also, he was fun loving also, and he had a lot of fun activities going on in his life, right? So that's all fine. And he had the opportunity to, he took the moment to give wisdom also, the divine wisdom to the hero of the battle. Correct? तो सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन किसी से अटैच नहीं. दैट इज हाउ यू नीड टू लिव योर लाइफ. जैसे कीचड़ में कमल होता है, वैसे भी आजकल कमल बहुत खिल रहे हैं. तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल. सब जगह गंदगी है, लेकिन कमल हमेशा कीचड़ से ऊपर होता है. सो यू लिव इन दिस वर्ल्ड बट नॉट बी अटैच्ड टू द वर्ल्ड. Yes, anybody else who wants to have some discussion or some sharing? Meanwhile, Tarun, welcome. Anything you want to share, please go ahead. Yes, anybody else who wants to share? So we're talking on the topic of slavery, the journey from slavery to salvation. That's what we are talking of. So in short, you can also say the journey of ego consciousness to soul consciousness. The journey of sleepwalking to self-realization or God realization. That is the journey we are talking about. Yes. Okay. तो कितने लोगों को दिखा कि आप कहाँ पे बॉन्डेज में हैं और कैसे उस बॉन्डेज से बाहर निकलेंगे और उस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे? यस निवेदिता जी. सर, हर एक का वैल्यूज या हर एक का बोलते हैं ना कि थिंकिंग दैट इज डिफरेंट. तो लेकिन जैसे आपने बोला कि जो आपको सही नहीं लग रहा है तो सही
करने के लिए अगर आप बताते हैं कि दिस इज नॉट राइट, और आपकी दृष्टि में जो ये सही है, अगर आप उनको बताने जाते हैं, स्टिल दे डोंट एक्सेप्ट, and then they go on their own path, which we find it is not okay, but for them it is okay, right? So in that case, shall we withdraw from that, कि हाँ भाई वो उनकी journey like that it is, Okay. like of course. First of all, it depends what is the level of commitment you have with that person. है ना? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अब कोई रिक्शे वाले को मैं कितना समझाऊंगा, एक बार समझा दूंगा कि भैया जरा प्यार से समझा ले, प्यार से गाड़ी चला ले, गाली गलौज की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर वो गाली गलौज करते तो करते रहे, मेरी एसोसिएशन उसके साथ 15 मिनट की होगी। I will forget after that. After that, I'm not going to see him for the rest of his life. So let him do whatever he wants. I will have given him my part of the understanding. Whether he follows it or not, his journey. Actually, that is true even when it is a close family member. But then you will have to interact with them more often. So, as a parent, you can definitely guide your children. You should give the values and you give whatever sanskar you have. But then ultimately the decision is theirs. After some time, you can only tell them option A, if you do this, most likely result is this. Option B, you do this, most likely option is this. Your choice, your life, your destiny, you choose. Don't force yourself on them, but you can give them advice if they ask. And if they are young, you should definitely give them advice. And कभी कभी discipline करना जरूरी होता है जब वो बहुत छोटे हों, especially when they are before the early teenage or whatever. After that, they will never listen to you anyway. So you have to give them option and tell them, work it out. दोनों try करके देख लो, जो अच्छा लगे वो अपना लो. That is all we can do. So first of all, you need to understand commitment आपकी उनके साथ क्या है. But किसी भी सूरत में आपको अपने एडवाइस के साथ अटैच नहीं होना है. और अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो नाराज नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है. Because they have not rejected you, they have rejected your advice, which is okay. ये नहीं कि उसने मेरी बात नहीं मानी, वो मेरा बेटा नहीं है, वो आज्ञाकारी नहीं है, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं उसको घर से निकाल दूंगा, मैं उसको जायदाद से बेदखल कर दूंगा. ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब फिल्मों में होता है. यू डोंट हैव टू गेट सो ड्रामेटिक. उसकी लाइफ है, उसको बता दिया, बाकी उसकी मर्जी. ऑप्शन बता दो दोनों, ए का ऑप्शन ये है, बी का ऑप्शन ये है, दोनों के रिजल्ट्स हैं एक्स और वाई, जो अच्छा लगे ले लो. मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी. You live in. That's what we normally do, right? But in no way you should be attached to the advice or the guidance that you give. Then you will be happy. And it still remains your son or daughter, right? Or brother or wife, whatever. Okay, good. Anybody else? That's a very practical question, by the way. So let's acknowledge Nivedita ji. Very good. Right. Anybody else who wants to share? Okay. So then let us take it a bit more deep discussion. What makes you, because we all know, given a choice, we all know that we have to give up slavery and we have to move towards salvation. What stops us? What stops us from, for example, let us take, what stops us from being in the victim ego? Victim ego में ही हम क्यों फंस जाते हैं? हमको मालूम है ये victim ego है, ये रुलाएगा, सफरिंग है, मिजरी है, ड्रामा है, तमाशा है, सब कुछ है, फिर भी हम उसमें फंस जाते हैं. क्यों? अगर फ्री हो गए ईगो से तो सैल्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी पक्का है. जितना हम आत्मज्ञान ले रहे हैं इतना तो हमको मालूम ही है. द ओनली थिंग which is stopping us to achieve self-realization is our ego, and the most powerful of that is the victim ego. One of them, I will not say most powerful. My case, it was victim ego. Yeah? So I love that. But no. So why are we stuck with victim ego? For example, दे रहा हूँ, आपका अपना होगा, आप वो देखिए. हाँ, yes, Simi ji. Because we feel comfortable being a victim. Absolutely. वो मेरा कंफर्ट जोन है. इतनी सिंपैथी मिलती है मुझे. Remember, as a child, when I was sick, everybody would come and say, "Oh, क्या हो गया? हाय बेचारा, स्कूल नहीं गया, ये है वो है, अच्छा इसको पापड़ ज्यादा खिला दो, इसको ये कर दो, इसको खीर खिला दो," kind of a thing. I would get a lot of attention. I would get a lot of sympathy.
सो विक्टिम ईगो को तो पूरा नर्चरिंग मिल गया ना, विक्टिम ईगो कहीं नहीं जाएगा। तो आई वॉज लुकिंग फॉर पीपल टू sympathize with me, to send me that miserable, poor me, pity me, miserable me से बड़ा मजा आता था, मेरा कंफर्ट जोन था, ईगो को पूरा नर्चरिंग मिलता था उससे। वो बड़े होके वो पैटर्न बन गया। बचपन में चलो ठीक था, अटेंशन मिलता था, बड़े होके पैटर्न बन गया। अब अटेंशन नहीं मिल रहा तो पक्का विक्टिम हो गया, नोबडी लव्स मी। Like go with the begging bowl, I won't get love, right? आज बाहर की दुनिया में कोई बेगिंग बोल लेके तो आजकल कोई भीख भी नहीं देता। तो आप भीख में प्यार मांग रहे हो, प्लीज लव मी, आई एम मिजरेबल। हु वांट्स टू मिजरेबल पर्सन? रोता हुआ ज्ञानी किसको पसंद है? हाँ। तो कोई आपको नहीं प्यार करने वाला है ऐसे। तो योर विक्टिम ईगो will remain a victim ego. It is a perfect recipe for disaster, suffering, and misery, and it is a perfect comfort zone for the victim ego. Now you understand? आपने अपने विक्टिम ईगो को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है कि वो आप पे हावी हो गया है। तो नंबर 1, स्टॉप लुकिंग फॉर सिंपैथी। यू आर होल, यू आर कंप्लीट, यू आर परफेक्ट, यू आर डिवाइन, अहम ब्रह्मास्मि बोलो और विक्टिम ईगो को लात मार के बाहर निकाल दो। कोई आपको सिंपैथी देता भी है तो बोलो आई डोंट नीड इट, प्लीज टेक इट बैक, आई डोंट वांट योर सिंपैथी, राइट? यू बेटर टेक लव, पीस एंड जॉय फ्रॉम मी एंड गो ऑन। मेरे से लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यू टेक लव, पीस एंड जॉय फ्रॉम मी एंड गो अहेड इन योर लाइफ एंड एंजॉय लाइफ। Nobody can reject you, nobody can upset you without your permission. How many of you can actually accept it? I don't need any approval from anyone. Now nobody can hurt you. If you decide I don't need any approval from anyone, I don't need any acceptance from anyone, I don't need any appreciation from anyone, nobody can hurt you. Can they hurt you? No. मेरे को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे बाप से कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब क्या उखाड़ लोगे? Now how can you upset me? You can't upset me. Get that? That is the only way to get rid of victim ego. Once you got rid of the victim ego, trust me, you are on the path towards self-realization. आप आत्मबोध, आत्मज्ञान को लेते हुए आत्मबोध की तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन अगर ये गड्ढा आपने पार नहीं किया तो आप इस गड्ढे में पड़े रहो। I'm talking straight away from the horse's mouth, from my life. जब तक मैं रोता रहता था, दुनिया ने खूब रुलाया। जब मैंने रोना बंद कर दिया, all the villains in my life just vanished. I'm not expecting anything from anyone. अब क्या कर लोगे? Get that? Aham Brahmasmi, I am divine. Krishna will take care of me. I don't need any human beings to take care of me. Now what? You want me to take care of you? I will do that. I will do that of my choice. I will give you a lot of love, peace and joy, energy. पकड़ो, अपनी healing करो और आगे बढ़ो life में. And don't depend on me also. I don't want you to latch on to me like a dependency. But I am there to support you. Whenever you want, I will be there. That is the approach of life. Correct? Victim ego जितना दूर रहेगा, self realization उतना पास आएगा. How many of you can see that? Now it could be your dominating ego, it could be your complaining ego, it could be your nagging ego, it could be anything. But for me, it was the victim ego. So that's why I took that. You see what is applicable in your life. But I'm sure कुछ ना कुछ element of victim ego रहता ही रहता है, क्योंकि बचपन में not everybody, I won't generalize it, but most of the people have this tendency of gaining sympathy. है ना? तो poor me, pity me, ये वाला टॉपिक तो हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहता है ह्यूमन बीइंग के लिए। Some point of time, as a child, as a 5-year-old or as a 10-year-old, you must have been victimized, and that adds to your victim ego. वो कभी जाएगा ही नहीं। उसको भगाने का एक ही तरीका, मुझे किसी की जरूरत है ही नहीं। Have faith in God. God will take care of me. That's the only way. Okay, let's have some people share. Because this is a very powerful insight. If you can latch onto it, I think this itself can transform your life. Yes. Okay, what is opening up? Anybody wants to share?
If you ask me, my whole transformation happened from the victim ego stage to the self-realization stage, and that path was very fast the moment I got rid of that victim ego. Of course, it took a lot of time, a lot of practice, a lot of effort, a lot of sadhana. But once I was on the track, I got it, then there was no stopping. And Leslie here is fully aware of the transformation. We both of us mostly had traveled on the same journey in the Landmark Forum. From 1997 onwards, this journey has really blossomed and taken me to different levels of consciousness. And the real understanding comes when you are rising up the ladder. That means from the root chakra to the third eye chakra. That's what I would say. जैसे जैसे ऊपर चाहते हो आप कॉन्शियसनेस में, वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाती है, वैसे वैसे क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका परसेप्शन क्लियर होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ क्लियर होती है, एंड दैट इज व्हेन यू एक्चुअली हैव द कंप्लीट परसेप्शन ऑफ लाइफ, मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. रूट चक्र के अंडरस्टैंडिंग से लाइफ को नहीं जी सकते, क्योंकि जो आपको 6 लग रहा है दूसरे को 9 लग रहा है, आपको पता ही नहीं आप सही हो या वो सही है. रूट चक्र कॉन्शियसनेस में यू विल नेवर हैव क्लैरिटी व्हाट इज द ट्रुथ. It is only at the third eye level or throat level or heart consciousness or the third eye consciousness where you actually see what is the truth, what is the puzzle of life, what is the real puzzle of life which you have solved. And unless you solve this, you will never have the complete understanding. और वो सॉल्व तभी होगा जब आप विक्टिम ईगो से और अपने पूरे ईगो को साइड में रख दोगे और डिविनिटी से ऑपरेट करोगे. मेक गॉड रियल इन योर लाइफ and operate from there. And you will find this path magical, miraculous and very easy. Actually बहुत आसान है ये. लोग समझते बहुत मुश्किल है. It is actually the easiest thing to do. Because the hardest thing you have already done. Victim ego के पाल पोस के बड़ा कर लिया, वो तो सबसे बड़ा मुश्किल काम था, वो तो आपने बड़ी आसानी से कर लिया. Yeah. Invoking the divine is the divine. You are already divine. There is nothing to be done there. Just have to understand it. And the things will open up. Okay, I've been speaking a lot, so let's have some people share. That's the Gyan for today, actually. So you can also share what is the takeaway from the session and any insights that you've got. Yes, Tarun, go ahead. सर, अभी आपने कहा कि हमने विक्टिम ईगो को बड़ा कर लिया, विच इज इजी थिंग, और जो अभी उससे पहले आपने एग्जांपल दी थी कि बचपन में आपको जब बीमार पड़ते हो तो अटेंशन मिलती है, तो वो तो हमने थोड़ी, वो तो मैं जो सराउंडिंग है हमारी, उन्होंने हमें उस चीज का एक एहसास दिलाया कि दिस इज समथिंग यू शुड फील गुड अबाउट, यू शुड look forward for this thing. No, they didn't say you should look forward to it. You decided you should look forward more of this. First you wanted that from the parents, then from your siblings, and then you wanted it from your neighbor, then you wanted it from your boss, then you wanted it from your wife, then you wanted it from your girlfriends. सबसे आप मांगने लगे, नहीं मिलने वाला है ये. भीख में प्यार नहीं मिलता है. You're going around with the begging bowl, asking for love. No, you have to fill yourself up with love and then radiate that love to everybody. You will get it back anyway, 100 times more. पहले देना सीखो. हम देने से पहले मांगना सीख लेते हैं. यहाँ प्रॉब्लम है. Ego is only interested in receiving. The divine is interested only in giving. What are you interested in? तो मैं वही सर, आप क्वेश्चन मेरा बीच में ही रह गया, आपने थोड़ा सा. तो ये जो सिनेरियो होता है जो बच्चे का, या आपने बताया कि विक्टिम ईगो जो बड़ा हो रहा होता है, माय पर्सनल लाइफ हैज बीन लिटिल डिफरेंट, बट एक स्टेट ऑफ लाइफ में जरूर आया जब मैं इस सिचुएशन में घुसा हूँ. इससे घुसने के बाद निकलने में बहुत एफर्ट लग रहा है. हाँ, क्योंकि आपने वो डिफिकल्ट काम यही था ना, ईगो को नर्चर करके बड़ा कर लिया विक्टिम ईगो को. वो मुश्किल काम है, वो आपने बहुत 25-30 साल लगा के कर लिया, 35-40 साल लगा के कर लिया वो. तो विक्टिम ईगो इतना स्ट्रांग है कि उससे बचना निकल के बड़ा मुश्किल लग रहा है अब आपको. बट ईगो तो आप ही का क्रिएशन था बॉस. This is your mind has created in a tough situation. You created the victim ego. It has no real existence. There is no truth. It is Maya. The truth is, I am divine. That is the truth. आप एक कहानी बना के उसमें जी रहे हो, उससे बाहर निकालना बड़ा आसान है. क्यों? क्योंकि सच्चाई क्या है देख लोगे तो हट जाएगा सब. आप सच्चाई देख ही नहीं रहे हो.
The moment you realize I am divine, then you don't need this victim ego to survive. Get my point? See, you can either operate from ego or from divine. The problem is हम अपने अधिकांश जिंदगी ईगो से ऑपरेट करते करते बिता चुके हैं और उसकी आदत पड़ गई है हमको. दैट इज अवर कंफर्ट जोन. हाँ मतलब वो वापस गिरता है, मतलब you उसको push छोड़ out, दो, you उसकी go तरफ back, you देखो ही push मत. out, you go Invoke the back. divine. Start saying I am divine and operate from there. That will fizzle out. You have to create a But वो emotions, parallel path. You have to create a parallel path. ईगो के पाथ पे चल के डिविनिटी नहीं मिलेगा. ईगो के पाथ को छोड़ के नया पाथ ढूंढना पड़ेगा. वहीं पे डिविनिटी है. वही सेल्फ सर रियलाइजेशन का मार्ग है. विक्टिम ईगो एक्टिवेट तो तभी होता है जब आप अपने किसी पास्ट मोमेंट्स को वहां पे हुक होते हो, तो अब उसके समझ गए ना कि विक्टिम ईगो कहाँ से आ रहा है. उसको छोड़ दो. छोड़ा नहीं जाता वो. उसको छोड़ने का मतलब यही है, उस रास्ते पे चलना बंद कर दो. यही तो मैं बता रहा हूँ. अदरवाइज सेल्फ रियलाइजेशन भूल जाओ. एंजॉय इट. ना कंफर्ट जोन है. बैगिंग बोल लेके घूमते रहो. कोई ना कोई तो दे ही देगा कुछ ना कुछ. आई वाज जस्ट रीडिंग टुडे द रिचेस्ट बेगर इन इंडिया. हाँ, सम जैन, आई फॉरगॉट हिज फर्स्ट नेम. भरत जैन, बॉम्बे में है. द रिचेस्ट बेगर in India. You would be amazed if you just do a Google search. You will find that details. क्या 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 assets हैं उसके पास. वो आज की डेट में भी कहता है I love begging. That's my passion. He has made it a syndicate. He has made it a professional organization. Anyway, a different topic, but yeah, I'm telling you. तो उसको मजा आ रहा है begging में. Victim ego का देखो कितना भयंकर manifestation किया है उसने. भीख मांग के, I don't want to give that example as a benchmark, but then what I'm saying is victim ego से भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, but they are only interested in taking. जिस दिन यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूनिवर्स ने लेना शुरू कर दिया, वो कहीं के नहीं रहेंगे. ओके, so you need to understand. Yes sir, is it clear? You want to add something more? नहीं, better of course every discussion is a one layer off from the onion. First you have to decide, are you happy with the victim ego or you want to move away from the victim ego? Be very honest about it. Like that richest beggar, he doesn't want to move away from the victim ego. He is happy. So if you're happy, then you live that life ना यार. अगले जन्म में कर लेना, क्या जल्दी है. विक्टिम ईगो पूरा कर लो. बट अगर मूव करना है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, तो इससे हटना पड़ेगा. और उसका एक ही तरीका है, स्टार्ट गिविंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग. ईगो ऑलवेज टेक्स, डिवाइन ऑलवेज गिव्स. ये रिमेंबर दिस इज द गुरु मंत्र. यस, लेट्स हियर व्हाट लेस्ली हैज टू शेयर. यस लेस्ली, गो अहेड. No, I just wanted to say, Tarun was saying ना छोड़ा नहीं जाता. तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब like I was just wanting to say, एक तो डैमेज दिख नहीं रहा होगा, एंड द अदर थिंग इज कि वो एंजॉयमेंट इतनी बार बार मिल रही है कि वो वाकई में नहीं छोड़ा है. सो यू आर क्वाइट करेक्ट कि जब तक इफ योर सेल्फ रियलाइजेशन का जब पाथ बहुत क्लियर होता है, तब ऑटोमेटिकली छूटता है, बिकॉज देन यू कैन सी इट्स डैमेज. then you say But कि yes, बॉस it's मैंने very, very बहुत सफर difficult. कर लिया. मैंने बहुत सफर कर लिया. विक्टिम ईगो का पूरे फ्लेवर्स ले लिए मैंने. सारी आइसक्रीम खा ली विक्टिम ईगो की. अब उसमें कुछ बचा नहीं है. नाउ आई डोंट वांट दिस. नाउ आई वांट समथिंग एल्स. देन ओनली यू विल मूव फॉरवर्ड. अदरवाइज कीप हैविंग दैट आइसक्रीम. कोई दिक्कत नहीं है. आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. विलन्स बहुत मिल जाएंगे आपको विक्टिमाइज करने के लिए. ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको घर में ही मिल जाएंगे. पड़ोस में मिल जाएंगे. आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे. योर फ्रेंड्स विल विक्टिमाइज यू. इवन योर बेस्ट फ्रेंड कैन विक्टिमाइज यू if you give him that opportunity. I will have a word with you on the call to Okay, have the clarity. that's right. But first you need to decide, ईगो विक्टिम ईगो में जीना है या उसको छोड़ के आगे बढ़ना है. जिस दिन डिसाइड कर लोगे आगे बढ़ना है, जर्नी आसान हो जाएगी. आधे रास्ते पे नहीं चलेगा. either you have to be on the left side, on the right side of the road. You can't walk in the middle of the road. ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा. एक मिलेगा. बोलो कहाँ जाना है. बीच में चलोगे तो क्या होगा. Yeah, so it's like walking on the railway track. You can't walk in the middle of the railway track. You have to either walk on the left side or on the right side, right? That means that you have to allow for the train to go by without harming you. Similarly, you have to decide ego चाहिए या divine चाहिए.
And by the way, you are already divine. Since you don't realize it, you have created a parallel mechanism of survival, which is your mind has created it, and that is what is ego. Ego का कोई existence है ही नहीं. Ego is your own creation. एक tough situation आई, survival issue में आपने उसे create कर दिया. Ego is not the truth. It is part of Maya. It is illusion. Divinity is the truth, and you are divine. That is the truth. You need to latch on to. Yes, Mani, go ahead. Sir, you had been saying कि ये सब ड्रामे हैं और everybody is like affecting our victim ego. The same goes with for me. Like I've been listening to Tarun, right? Same questions. I think moreover like in a similar situation as well. ये सारे ड्रामे इतने रियल क्यों लगते हैं? क्यों नहीं हम समझा पाते अपने मन को कि ये सब ड्रामे हैं, ये आज है कल नहीं है? क्यों ऐसा, मतलब Because हमेशा ये you सब are चीजें इतनी रियल क्यों लग रही है? associating yourself with the character in the movie. Suppose you are watching a movie, okay, and you say कि यार ये मीना कुमारी ही हूँ मैं. अब मीना कुमारी रो रही है, उसको विलन तंग कर रहा है, उसकी मदर इन लॉ तंग कर रही है, उसको टॉर्चर कर रही है, उसको जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद मीना कुमारी. नाउ हाउ वुड योर लाइफ बी? विक्टिम. द मोमेंट यू रियलाइज हे दैट इज अ मूवी, दैट्स अ ड्रामा, तमाशा है, ये फाइनल नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, ये सिर्फ रियलिटी है 3 घंटे की. Then everything is over. Then you are not associated with Meena Kumari. You are looking at a character. Get my point? You are looking at money as that I am money. No, you are not money. You are playing the role of money for this, I will say 3 hours movie or this 80 years life. ये 80 साल की जिंदगी आपकी 3 घंटे की मूवी के बराबर है. You are not money. सर बात आपकी मांगे, वी आर नॉट मनी. You are playing the role of money. एक मिनट, मैं अभी मनी से बात करूं. You are playing the role of money in this life, and this movie is called Autobiography of Money. ये एक मूवी है और इसमें प्रोड्यूसर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो. आपने ही सब एक्टर्स को चूज किया, आपने मूवी बनाई, आपने उनको पे किया है इस रोल पिक्चर में एक्टिंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए आपको. और जब आप मूवी देख रहे हो तो आप रो रहे हो. आपने ही डिसाइड किया था बिफोर यू टुक दिस बर्थ कि मैं एक ऐसी मूवी बनाऊंगी और ये सारे एक्टर्स मिलके आएंगे और मेरे को तंग करेंगे, एंड आई विल एक्सपीरियंस द विक्टिम ईगो. सो दैट वाज द पर्पस. ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? अब उस ड्रामे को आप सच मान के रो रहे हो. कम आउट ऑफ दैट ड्रामा ना. 100 साल पहले आप मनी नहीं थे, 100 साल बाद आप मनी नहीं होंगे. ये 3 घंटे की मूवी है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्हेन आई से इट इज अ ड्रामा. आप 5,000 साल से हो और अगले 5,000 साल तक रहोगे. आप इसमें रानी लक्ष्मीबाई भी बनी थी. गेट माय पॉइंट? अब जो जो कैरेक्टर्स आप सोच सकते हो सोच लो. आप रैम्बो भी बने थे, आप कमांडो भी बने थे, आप बहुत कुछ बने थे. तो इस मनी से क्यों अटैच हो गए हो? You are सर not money. कॉन्शियस You वाला are साउंड operating through money. Get my point? You are not this body. You are not this mind. You are operating through this body and mind. Who you are? You are Brahman. You are divine. You are a soul playing the role of money in this lifetime for maybe 100 years. That is the drama you need to understand. तब आप फ्री हो गए. फिर आप जो मर्जी कर्म करो. You are free from the karmic debts. Because you are operating from the soul level. Get my point? Think about it. Call me later. Thank Yep. you, sir. Good. Let's acknowledge money. That was very tough. Tough insight and a very tough explanation. But I hope you got some message. Yes, Tarun. Good. सर आपका ये पॉइंट मान लिया मैंने कि 100 साल की हमारा ये ड्रामे की चल रही है. हम अगले 100 साल कुछ और ड्रामा करेंगे, पिछले 100 साल कुछ और Correct. क्या है. But if you're not happy with this, you say नहीं मेरे को अभी और विक्टिम बनना है, तो अगले 100 साल भी आप एक और फॉर्म में अभिषेक बन के आओगे और फिर विक्टिम बने रहोगे. सर मैं फिर आप ये कहोगे कह नहीं रहा मेरे हूँ को विलन बनना है, आप तो अगले 500 साल तक आप विलन बनोगे. फिर आप
सर पर ये वाले साल के अंदर हम आगे और पीछे छोड़ देते हैं अभी, है ना? हाँ, तो ये तो ड्रामा निकल है, रहा है। ये 3 घंटे की मूवी है। आपको ये समझना है, शोले पिक्चर में अमजद खान ने संजीव कुमार के हाथ नहीं काटे थे, गब्बर ने ठाकुर के हाथ काटे थे, कहानी खत्म। If you can understand that, you will be free right now from the movie called Sholay, and you will be free in this lifetime from the being called Tarun Badwa. You are playing the role of Tarun Badwa. You are not Tarun Badwa, by the way. है बट उसके पास कुछ जो रोल प्ले कर रहे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। Correct. तो रोल को प्ले तो करो, अच्छे से प्ले करो। तो Correct. वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हुए ही तो इमोशंस आते हैं, उन्हीं में तो इमोशन को इंसान आने दो, मूव। लेकिन इमोशन है बोल के छोड़ भी तो दो। रोना है तो रो, हंसना है तो हंसो, अगले क्षण में फ्री हो जाओ। ये नॉन अटैचमेंट है। दिस विल हैपन व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग गोज टू द हाई लेवल। अभी बहुत लो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए अटैच हो गए। थिंक अबाउट इट। फर्स्ट गेट इट एज एन इनसाइट, देन यू प्रैक्टिस इट इन द योग, in the path of yoga that you have chosen. Then you will get some understanding. Talk to me tomorrow. We'll get some more clarity. Yeah. ठीक है सर, I'll do that. All right. So with this, we come to the end of the session. Last and final call. Anybody who wants to share? Otherwise, we close the session. It's already 5 minutes over time. Yes. Okay. So in that case, thank you very much. Enjoy a great week. We meet again next week with a lot more discussions. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Bye-bye. Thank you sir, thank you Leslie. Thank you, Thank you. sir. Take Thank care. you, Bye-bye. everyone.